session now. Welcome to Universe. So today we will be talking about an abstract topic in the beginning. You can lower your hands. So today we will be talking about an abstract topic first, reading levels. We will dive into C later, but first we will start with reading levels. So you might be familiar with the term reading levels. जैसे कि हम स्कूल जाते थे तो आपने देखा होगा कि स्कूल में जो भी हम बुक्स मिलती थी हमें इंग्लिश की मान लो तो उसमें जब हम फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में थे तो उसका टेक्स्ट बहुत सिंपल हुआ करता था बट जैसे जैसे हमारे स्टैंडर्ड आगे गया हम सिक्स्थ में गए एट्थ में गए इलेवेंथ में गए ट्वेल्थ में गए उसका लेवल बढ़ता जाता है जो टेक्स्ट होता है तो आई वुड लाइक सम ऑफ यू गाइस टू वॉलंटियर टू रीड दिस आउट फॉर मी इफ यू can someone raise their hand and read this out? Yes, Anirabhan Mishra. Can you read this out? I don't think he is here. About to put my hand down. So anybody who wants to read this out, just turn on your mic and Vinay Shah. Yes, go ahead, please. One fish, two fish, red fish, blue fish. I can't hear you. Can anyone hear him? Hmm. Yeah, so it's basically written as one fish, two fish, red fish, blue fish. Why can't I hear him if he's audible? Let me check my setup just a second. Um, अमन एक बार माइक ऑन कर कुछ बोलो मेरे वीडियो में इशू आई कांट हियर यू गाइस जस्ट अ सेकंड लेट मी चेक Hello, hello. I am audible now. Hello. हेलो एक बार फिर से बोलिए अमन हाँ नाउ आई कैन हियर यू गाइस सुन सकता हूँ मैं लेट्स कंटिन्यू सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज वन फिश टू फिश रेड फिश ब्लू फिश सो कैन यू गाइस आंसर इन द कमेंट बॉक्स ये कौन सी ग्रेड का टेक्स्ट होगा तुम्हें ऐसा स्टेटमेंट कौन सी क्लास में पढ़ाया गया होगा जस्ट टाइप इट आउट इन द कमेंट्स Okay, so majority of the answers are grade 1. And yes, you guys are right. It's preschool or in grade 1 only. So this was a very basic simple answer. And now if we move to this problem. Congratulations, today is your day. You're off to a great places. You're off and away. Which class do you think you guys would have this statement in? Just quickly type it out in the chat box. Be fast. जल्दी करो. Hmm, yeah, I don't think you guys would have this.
in the sixth grade, but yes, I will also agree with the third grade. So this is a grade three problem. Fifth grade में तो biology आ जाती है भाई. And now let's move to this statement. It was a bright cold day in April, and the clocks were striking 13. Winston Smith, his chin nuzzled into his vest in an effort to escape the wild wind, slipped quickly through the glass doors of Victory's mansions, though not quickly enough to prevent a swirl of gritty dust from entering along with him. क्या लगता है ये कौन सी ग्रेड में पढ़ाया गया होगा? Yeah, so as you guys can figure out, it's a like a higher grade problem. So this was actually a grade 10 problem. Swastik was right about it. So why am I telling you all this? This you will later discover when you will solve your assignment for this lecture. So I hope you guys will enjoy the assignment. So now moving forward, I will talk about cryptography. And all this is related to C only because in the problem statements that you guys will be solving, you will be needing to use all of this. So what do you understand by cryptography? Cryptography is hiding away the actual data. You guys would probably be familiar with cryptography कि you take the actual data and transform it into some other form. जैसे यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है. क्या लगता है ये किस चीज का इंक्रिप्शन है? ऐसे देख के बताना तो ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है क्योंकि दैट्स द सोल पर्पस ऑफ एनक्रिप्शन दैट द यूजर हु इज रिसीविंग द डेटा इन द मिडल कांट इंटरसेप्ट एंड इंटरप्रेट इट. कि तुम बीच से जाता हुआ डेटा लेके समझ नहीं सकते कि उस डेटा के अंदर क्या है. जितने भी तुम्हारे पासवर्ड स्टोर होते हैं वो भी एनक्रिप्टेड होते हैं. जो भी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डेटा होता है आज के वर्ल्ड में उसको एनक्रिप्ट कर दिया जाता है. तो बेसिकली दिस वाज द एनक्रिप्शन फॉर इनोवर्स ओनली. And as you can see the mapping, I is mapped to U, N is mapped to I, and vice versa. So this is encryption. And now after I've told you all the both concepts, you guys will be using these concepts in the problem statement. So let's continue with our C class. लास्ट वीक तक ओवरऑल तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया होगा कि सोर्स कोड क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, मशीन कोड क्या होता है. बट टुडे आई विल delve into a little bit detail. सोर्स कोड तो वो होता है जो तुम प्रोग्रामिंग करते हो, विजुअल कोड खोल के उसमें जो डॉट सी फाइल बनाते हो उसको कहते हैं सोर्स कोड. उसके बाद कंपाइलर जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग सेटअप सेशन में तुम सबने इंस्टॉल किया होगा मिनजी डब्ल्यू, वही था तुम्हारा कंपाइलर जिसमें जीसीसी कंपाइलर होता है उसका नाम. और उसका काम होता है जो तुम सोर्स कोड ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में लिख रहे हो उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करना. अब देखते हैं एक कंपाइलर कितने प्रोसेसेस के थ्रू सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर सकता है. सो दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम. यू कैन सी ये सब तुमने फर्स्ट क्लास में ही किया था. प्रिंट हेलो वर्ल्ड, दिस वाज द मोस्ट बेसिक कमांड देयर वाज. एंड दिस इज द कंपाइल्ड मशीन लैंग्वेज वर्जन ऑफ द कोड. कि जब तुम हेलो वर्ल्ड को कंप्यूटर को पास करते हो तो ये ऐसा दिखता है. Computer only understands binary, it only takes 0 and 1 as values. But in the middle of it, what all happens that I'm going to tell you right now. So this was the code dot slash hello you guys would have used to run the code. And this was the code. So now we will go towards compiling. What are the steps included in compiling? So for compiling, first we do pre-processing, then we do compiling, then we do assembling, then we do linking. These all are the steps involved in the compilation of our code. So first we will go to pre-processing. What does pre-processing mean? So as you can see here, here is our function. Meow, we have named the function. And in the function declaration, you can see, I hope you guys would have been taught functions by now. But in C, basically what you have to do, if you are going to define a function below the main loop, you guys need to define a template of the function above the main loop before you are going to define it later in the loop. तो बेसिकली व्हाट दैट मीन्स इज कि अगर तुम्हें कोई फंक्शन डिफाइन करना है अपने मेन लूप के बाद तो तुम्हें उसके बारे में पहले ही टेम्पलेट देना पड़ेगा मेन फंक्शन के ऊपर कि आई एम गोइंग टू डिफाइन अ फंक्शन नेम्ड म्याओ which will take no inputs and which will give no outputs also. यहाँ पे void लिखने का मतलब होता है कि वो कोई आउटपुट नहीं दे रहा और ब्रैकेट के अंदर void लिखने का मतलब होता है वो कोई इनपुट भी नहीं ले रहा. And now later on after the main function we are defining the
actual definition of the meow function, what it will do. So it's basically printing meow for now. अब जब ये प्री प्रोसेस होता है, जो हमने जो भी फंक्शन लिखा, उसमें ऐसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं. आई रिमेम्बर प्राप्ति टीचिंग दिस इन द फर्स्ट क्लास. बट व्हाट यू सी इन योर कोड एज हैश इंक्लूड, ये सारी लाइब्रेरीज प्री डिफाइंड होती है तुम्हारे कोड के अंदर. और वो तुम्हारा जैसे प्रिंट एफ फंक्शन है, उस प्रिंट एफ फंक्शन का मैं एक्चुअल डिक्लेरेशन दिखाता हूँ इस लाइब्रेरी के अंदर किस तरह किया गया है. जब तुम यहाँ पे हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच लिखते हो, तो एक्चुअली वो इनसाइड द कंप्यूटर जो लाइब्रेरी डिफाइंड है वो इस तरह है. इंट प्रिंट एफ स्ट्रिंग फॉर्मेट कॉमा डैश डैश डैश, यहाँ पे तुम्हारे सारे पैरामीटर्स आते हैं. So this is the actual implementation of your printf function which is inside standard input output.h. So this is the pre-processing step जिसमें तुम्हारे pre-processor directive जो hash के अंदर दिए रहते हैं, उसको तुम्हारा compiler लेके उसको process करता है. This was your pre-processing stage. And after the pre-processing stage comes the compiling stage. Compiling stage में वही होता है तुम्हारा. Sorry for the interruption. I'll continue. So basically, when it comes to the compiling stage, this is where the code is converted into assembly language. Assembly language is a mid-level language. It's not actually machine code, but it's an intermediary language that is connected between your source code and your machine code. So first your GCC compiler converts the code into assembly code. So this was the function. If you convert it into assembly code, this is how it actually looks like. So this is the assembly code. You guys don't need to know all the details about it, but you can see here how it is actually giving the commands to your actual computer, and later this only will be computed and converted into machine code. So after the assembly process, you can see here are the some main functions, and here is printf, get string, whatever you wrote in the source code. Some parts of it are also common in the assembly language, but rest of it is not common. And these are all the special functions defined in assembly language. After that comes the assembling stage. The assembling stage is the stage when it's converted into assembly language. Yes. So here is the stage where your code gets converted into machine language, which is zeros and ones. You can see, and now comes linking. So basically linking means that you got your preprocessor directive जो हमने hash define से ऊपर include कर रखे हैं. उसके बाद तुम्हारी libraries होंगी जो तुमने import की है. उसके बाद तुम्हारा source code होगा जिसको हमने assembly language में convert कर दिया. अब तुम्हारे कंपाइलर का फाइनल स्टेप होता है कि इन सारी चीजों को एक दूसरे के साथ प्लस करके समझ लो एक फाइल में लिख देना, जिसे लिंकिंग कहते हैं. इट लिंक्स ऑल द फाइल्स टू ईच अदर बिकॉज उन सारी फाइल्स में जो फंक्शंस डिफाइंड है वो यूज करने पड़ेंगे तुम्हारा कोड चलाने के लिए. सो लिंकिंग बेसिकली वर्क जैसे ये तुम्हारा फंक्शन डिफाइंड था हेलो डॉट सी. ये मान लो तुम्हारी तीन लाइब्रेरीज है जिसमें हेलो डॉट सी तुम्हारा मेन फंक्शन है, सी एस फिफ्टी डॉट सी एक लाइब्रेरी का नाम है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट सी भी एक लाइब्रेरी का नाम है. सो बेसिकली व्हाट योर कंपाइलर डज इन द एंड इज कि इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया, और इसको भी मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया. नाउ इट सम्स इट ऑल टुगेदर एंड क्लीन्स इट अप एज अ सिंगल फाइल. So now in the end, your program just becomes a single machine code file and it looks like this. और ये तुम्हारे CPU के पास जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए. So this is how the actual compiler works in the background. तुम्हें तो बस बता देते हैं कि लिखते हैं और वो कंपाइल कर देता है. But these are all the steps that are involved in the actual compilation of your code every time you run it. And yes, I told you about all the steps. Now decompiling. Sometimes you have the machine code और तुम्हें मशीन कोड को कन्वर्ट करना होता है वापस सोर्स कोड में. दिस इज नॉट अ इजी टास्क, और उसके लिए तुम्हें मशीन लैंग्वेज भी आनी चाहिए, असेंबली लैंग्वेज भी आनी चाहिए, और सोर्स लेवल लैंग्वेज भी आनी चाहिए जिसमें एक्चुअल कोड लिखा गया था. तो दैट्स कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग, बट इट्स आउट ऑफ स्कोप फॉर नाउ. आई वाज जस्ट टेलिंग यू अबाउट इट. देन कम्स डीबगिंग. जब भी हम कोड लिखते हैं तो उसमें एरर्स तो ऑब्वियसली आते हैं, but how do we fix those errors? So now I'll show you a quick statement of code if I can. Uh, yes.
And before that, I'll load the slide. So yes, this is a good story. This is the brief history behind why is it called debugging. So when the first computers were initially made, a thing happened that an actual bug got stuck in the computer. I'll show you its photo. Here you can see an actual bug had been stuck on the relay 70 panel of the computer that was made. So this is where the term debugging was originated at. You can see it's an actual bug inside the computer. They have preserved it also. And these were the system logs. They used to write it by hand कि ये पहले हुआ, ये किया, उसके बाद फिर ये आ गया. So yes, I don't think you guys would have seen this, but imagine this as a problem कि मेरे को print करना है एक tower. How do I print a tower? Tell me. Anybody in the comments? I want to print a tower. Let's simplify it. I want to print a tower of hashes. मेरे को तीन हैश एक के ऊपर एक स्टैक करके प्रिंट कराने हैं अपने टर्मिनल में. मैं कैसे करा सकता हूँ बताओ, जल्दी बताओ कमेंट्स में. Just simple name me the loop you will use for it. What loop? Nice. So you can basically print this out as Mod Sami said. You can directly use hash backslash n hash backslash n hash, and it will give you this expected output. So now I'll show you a piece of code and you guys have to tell me what's wrong with it. Or if it's right, you can say it's right. I want to print exactly three hashes. Yes. So can someone tell me how many hashes will it print? Why? What's the problem? Why? I need answers. Why will it print 4 and not 3? Yes, you got it right because it has greater than or equal to 3. That's the issue. Yes, you are exactly right. So how do you debug it? Suppose that I don't know about this कि क्यों 4 print हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा. I run this code and it prints 4 hashes. Now I am confused. Why did it print 4 hashes? Some of you guys know, but this is the part where I will introduce you to debugging. How can you debug this code? So यहाँ पे देखो, if I can zoom it in, I will. Uh, yes, I hope it's bigger. Yes. So here you can see we are using a for loop for printing, and the for loop goes from int I equal to 0, I goes from greater than equal to 3 to I plus plus, and we have now included a print statement. What does the print statement say? The print statement says I is percent %I. I hope you guys are familiar with the format specifiers. These are used to print specific type of data types. I'll tell you a little bit about data types later in the lecture. So I here is the variable which is running inside the for loop, and I is getting its value incremented after each iteration of the loop. So now we are printing how many iterations the I value is changing over. So we can see it how by running it. Uh, it's running into some issue. I don't know. I is percent backslash. Yes. Here we go. Oh, the backslash was put wrong somehow. So now you can see the values of I being printed. If I hope it's visible to you guys. So you can see I goes over 0, 1, 2, and 3. So that's basically 4 values of I. That's why we are getting 4 of the hashes printed. So now we use print statements everywhere to debug what is actually happening inside our code. So we can understand what issues we are going to run into and what is causing the problem. So after we fix the issue,
Okay, two dots. Yeah, so after that you can fix the issue and get it sorted. I'll not delve into this. You'll get confused. Yeah, so continue with our presentation. Now we will talk about the printf statement. You guys know we were debugging this only. भैया I equal to I plus 1.1 करके debug हो जाएगा. 1.1 क्या होता है? You will have to use a print statement somewhere now to know that you are going to see what value or what is actually happening inside the loop. तो करना तो पड़ेगा ही. उसके बाद types. As I told you, we will be discussing about a little bit data types because today our main topic of discussion is arrays and also strings with it. So now we will delve a little bit into types and you will understand why. So there are a lot of types in C. First is the Boolean, which takes true or false value. Then we have integer. Then we have long. Then we have float, double, car, and string. Int takes 4 bytes of space. Float also, character takes 1 byte of space. And I would like to ask you how much space float takes. Can someone tell me in the comments how much space does float takes? 4 bytes. Good answer. So, and how much does a double take? Can anyone answer? Anybody? Okay, now, and yes, it takes 8 bytes. You are correct. And now I would like to ask how many bytes does a string take? Can anyone tell me that? Answers, answers. Quickly. How many bytes does a string take? Tell me. You can turn on your mic and tell if anyone has answers. I guess no one has the answer to my question because it depends. The size taken by a string is not fixed, and you guys are right not to answer the question. So I'll show you how much each of them takes. A boolean takes 1 byte of space. Also, a character takes 1 byte of space. A int takes 4 bytes of space. A long takes 8 bytes of space. Float takes 4 bytes, as you said. Double takes 8 bytes of space. And strings take a question mark amount of space. So we will see why this is the case. Now, anybody familiar with what this is? Quickly in the chat box. इतना तो पता होना चाहिए. कंपनी से तो पहचान जाओ. RAM stick. RAM. Exactly. This is a RAM. Most of it जो ये देख रहे हो तुम golden contacts, green boards, ये RAM नहीं होता. Actually RAM are the black squares you see. These are RAM. जो exactly highlight होके दिख रहा है. So let's zoom it a little bit. This is the RAM and it has compartments. जब भी तुम अपना प्रोग्राम में मेमोरी एलोकेट कराते हो, it's getting allocated in one of these compartments, and these compartments are also subdivided into multiple parts. For very overview of simplification, I will show you it in small boxes, but इसमें thousands and thousands of memory locations होते हैं. But we will take a very general simplification. Just imagine it is divided into these parts and it's highlighted one. This means it's storing a character. जैसा कि मैंने बताया इसका एक बॉक्स का वैल्यू मान लो 1 बाइट है. So this one is storing a character. As you can see, this is how a character gets stored in your RAM. It goes into the first memory address and takes exactly 1 byte of space. उसके बाद ये बताओ क्या है. जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स. फ्लोट. और क्या हो सकता है? द कॉमन आंसर इंट. एग्जैक्टली. उसके बाद ये क्या है? जल्दी जल्दी जल्दी.
Tell me, what is this? Yes, it's a, you can call it a long int also, double also. All of them take 8 bytes of space in your storage. But the thing with long int and double is ki it depends on your system. In some systems, it also takes more storage when you declare a long int or a double. So here is your RAM. Let's zoom it in a bit more. And now suppose we are going to store three ints, 72, 73, and 33. We are going to store it in our memory. So we stored 72. As you can see, how many bytes did it take? It takes 4 bytes for storage. Then we store 73. It gets stored in the consecutive compartment only cause space is there. And then we store your 33. This is how your data type gets stored in the RAM. उस दिन एक बच्चा सवाल पूछ रहा था कि अगर मैं 1 डालूं इंटीजर या मैं 9999 इंटीजर डालूं, वो दोनों सेम अमाउंट ऑफ स्पेस क्यों लेते हैं? उसका आंसर इसी में है क्योंकि बाय सिस्टम डिजाइन an integer is designed to only take 4 bytes of space in your memory irrespective of वो 1 हो या 9999 हो, it will only take 4 bytes of storage in your space. And from what I remember 4096 के बाद नहीं कर सकते तुम store integer, you have to use a long int because 4 bytes of space is not enough to store more than 4096. But once से 4096 सेम अमाउंट ऑफ रैम लेते हैं 4 बाइट्स का. And this is the binary representation of them. This is how they are actually stored in the RAM. So this is why तुम 1 स्टोर करो, वो 1 भी ऐसे ही स्टोर होगा, 0 0 0 0 0 0 इतने सारे zeros, और लास्ट में उसके लास्ट वाली बिट 1 होगी. So it's taking the same amount of space irrespective of whatever the number is. Because वो उसको 0 से पैडिंग कर ही देगा. अगर तुम कुछ नहीं डालोगे, 1 डालोगे तो it will pad it with all zeros and 1 1. Otherwise तुम 4096 डालोगे तो मे बी इसमें से बहुत सारे 1 हो जाएंगे. So this is why int always takes 4 bytes of space in your storage or RAM you can call it. Now we will talk about arrays. Anybody knows how arrays are stored in the memory? अभी तक तो definition सुन ही ली होगी किसी ने. Anybody in the chat box. करो करो आंसर करो. How is an array stable? मेरे को एक वर्ड चाहिए. What is the word? Give me that single word जो arrays के साथ हमेशा join होता है. किस टाइप से स्टोर होती है arrays तुम्हारी मेमोरी में? Tell me. No one knows. Index. नहीं, index is, yes, you are right, but why is it able to store it as an index? Why does the data does not get lost? List. Okay, but what is the word? List तो एक data type हो गया ना. How is it stored in the RAM? Tell me that. मैं बताता हूँ. It's basically stored. It's stored as a block. Exactly. It's stored as contiguous memory. मतलब जो memory blocks एक array को assigned होंगे, they are assigned one after the another in the RAM. जैसे if we go to the previous example, आगे भी होगा वैसे. Like we define a array named scores. Int scores 3. This is how you define a array. 3 means your array will have 4 elements. So this is C 0 से start होता है, वो उसका है nitty gritty. But this is going to take depending on the data type. अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, अगर एक array में 4 एलिमेंट है और उसका डेटा टाइप int है, how much storage will it take in my RAM? Tell me in bytes quickly. I have 4 elements and each element takes 4 bytes of space in my RAM. So how much total amount of RAM is this array going to take? Simple maths. Yeah, 16 bytes. Good, good, good. So, and now we are going to store in our array score 0, score 1, score 2, and we are going to, जो previously हमने किया था, simple बना के integer, now we are going to do it with the array. So now it will be stored in the same way because our RAM is limited in the width. Otherwise, it would be stored in the width only, contiguously. So now you can see it has memory addresses as score of 0, 0 and 1, 2. These are the indexes in the array. An array is indexed from starting from 0 to till whichever number it is defined.
So you can see scores of 0 has 72 because we stored it initially. Scores of 1 has 73, scores of 2 has 33. And these are contiguous blocks of memory. मतलब ये एक के बाद एक आ रहे हैं, joined है एक दूसरे से. They don't have any gaps in between them. Array जब भी define करोगे, array के बीच में gaps नहीं हो सकते. Now we will see how characters are stored. Just imagine you created three characters, H, I, and exclamation mark hi basically. This is how they get stored in your memory. And now let me tell you, whenever you store characters, characters are not contiguous. अगर हो सकता तो H यहाँ है, I यहाँ है, exclamation mark यहाँ है, वो भी हो सकता था मेमोरी में. Unless you define it as a string, your characters will not be stored in contiguous memory. जैसे and you guys would ask me what is 72, 73, 33. Can anyone tell me what is 72, 73, 33? Why are we representing the characters as numbers? Does anybody know? Quickly in the chat box. What scheme is this which converts the characters into numbers? Yep. सारे आंसर तो मत दे करके गलत बात है. बोलने दे बच्चों को भी. So yeah, it's the so this is the ASCII scheme. I will be talking about it later. And this is the numerical conversion into binary of the numbers. So जब भी तुम कैरेक्टर स्टोर करते हो अपने कंप्यूटर में, कंप्यूटर कांट स्टोर एनीथिंग एज कैरेक्टर्स. मैंने तुम्हें पहले भी बताया, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड जीरो या वन. कंप्यूटर को और कुछ समझ में नहीं आता. तो वेन एवर यू स्टोर कैरेक्टर्स, दे गेट स्टोर्ड एज बाइनरी वैल्यूज ओनली. But every character in our ASCII scheme has a specific number assigned to it. तो जब भी हम उसे कैरेक्टर की तरह डिफाइन करते हैं, तो it gets assigned the मतलब fixed number and it's stored as a binary in the memory, but it will be read as a character because तुमने उसे कार की तरह डिफाइन कर रखा है उसके डेटा टाइप में. And now we will come to strings. If I can find the ASCII scheme, I'll show you in this PPT only. So now imagine we create a string called hi. अभी तक तो हम उसको इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की तरह स्टोर करा रहे थे, बट नाउ वी डिक्लेयर अ स्ट्रिंग व्हिच इज नेम्ड हाई. हाउ विल इट बी स्टोर्ड? सो दिस इज हाउ योर हाई विल बी स्टोर्ड. अभी तुम देख रहे थे जब हमने कैरेक्टर की तरह स्टोर कराया था, सो इट वाज स्प्लिट इनटू मल्टीपल सेल्स बिकॉज दे वर स्टोर्ड सेपरेटली एज डिफरेंट वेरिएबल्स. दे वर नॉट टुगेदर. बट व्हेन यू स्टोर इट एज अ स्ट्रिंग, इट विल बी स्टोर्ड एज स्ट्रिंग एस. और इसका यहाँ पे string का नाम is basically a pointer. I will talk about it more when I teach you guys pointers. But for now you can understand that string का individual कोई address नहीं होता बीच के elements का. अगर तुम चाहो फ्यूचर में कि मैं i का कोई स्पेसिफिक एड्रेस होगा मेरे लिए स्टोर्ड, स्ट्रिंग के साथ नहीं होता. इफ यू वांट टू एक्सेस अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का नाम ही पॉइंटर होता है उसके फर्स्ट 0th इंडेक्स का. So whenever you call a string, it starts with the first 0th index and starts iterating जो भी उसके आगे है जब तक string की length खत्म नहीं हो जाती. Every string is concatenated with \0 so that it understands कि string कब खत्म हो गई है. But string के individual characters का कोई storage नहीं होता and you can't access them if you don't have the pointer to the first index जो 0 index होता है. Here you can see the index scheme: s of 0, s of 1, s of 2, and a string is also stored as an array only. तो तुम इस पे सारे array के फीचर्स यूज कर सकते हो कि मैं s of 1 को यूज करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ. बट इसमें याद रखना जो ये s है, s is the pointer to the 0th index. जो यहाँ पे h लिखा हुआ है, s is the pointer to the 0th index. ये बात याद रखना बहुत जरूरी होती है. स्ट्रिंग का जो भी नाम होता है, इट इज द पॉइंटर टू द 0th इंडेक्स. और जब तुम s of 1 लिखते हो तो s of 1 करते ही पॉइंटर यहाँ पे होता है. 1 का मतलब एक स्टेप आगे आ जाना. सो इट जंप्स फ्रॉम h to I. दैट इज द मीनिंग ऑफ s of 1. So this is how your basically strings are stored in your memory. And this is what I was talking about कि तुम्हारी string जहाँ भी खत्म होती है, it is concatenated with 00000 which is basically called \0. It marks कि तुम्हारी string यहाँ पे खत्म हो गई है. So this is automatically generated. You don't need to create it. It's automatically generated by your system whenever your string ends. उसके बाद yes, as you can see, it's not an actual zero. ये value वाला zero नहीं है. This is \0 and it's automatically added by your system. Yes, \0 as you can see.
एंड दीज आर द एक्चुअल लिटरल वैल्यूज दैट विल बी स्टोर्ड। जब तुम हाई नाम की स्ट्रिंग बनाओगे, यही वैल्यूज तुम्हारे हर ब्लॉक में स्टोर्ड होगी। एंड नल, नल इज बेसिकली अ स्पेशल मेमोरी एड्रेस। एक बहुत स्पेशल मेमोरी एड्रेस होता है जो तुम्हारी मेमोरी के जो ये ब्लॉक्स दिखाए थे ना मैंने तुम्हें पिछली स्लाइड्स में, लेट मी गो बैक। जैसे मान लो ये है, तो जो तुम्हारा फर्स्ट ब्लॉक होगा तुम्हारे रैम का, जो वो ब्लैक ब्लैक बॉक्स थे पहले बने हुए छोटे छोटे, उनका जो फर्स्ट मेमोरी एड्रेस होता है दैट इज रिजर्व्ड एज अ नल पॉइंटर। जब भी तुम कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज करते हो, तुम उसकी वैल्यू को जीरो से इनिशियलाइज कर सकते हो। नल का नल होता है बेसिकली, जीरो नहीं होता। नल का मतलब होता है कि एक ऐसी मेमोरी लोकेशन जिसमें कुछ ना हो। सो यू कांट लीव अ मेमोरी लोकेशन एम्प्टी, सो यू फुलफिल इट विद नल। कि ये जो मेरा पॉइंटर है इस मेमोरी एड्रेस का, मैं उसको नल पे पॉइंट करा दूंगा, इसका मतलब उसमें कुछ भी स्टोर नहीं है। सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल। And this is what I was talking about. This is the infamous ASCII scheme, where null is defined as zero, literal number zero. इसी के हिसाब से तुम्हारे जो कैरेक्टर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, या जो पंक्चुएशंस होती है, वो तुम्हारा कंप्यूटर स्टोर कर पाता है। दिस इज द ASCII स्कीम। अब इसमें तुम देख सकते हो, जैसे यहाँ पे तुम्हारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे तुम नंबर्स देख रहे होगे, अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि नंबर्स को नंबर से कैसे मैप कर रखा है। तो ये नंबर्स टू नंबर मैचिंग का ये मतलब हुआ कि अगर तुम एक नंबर को स्ट्रिंग की तरह पास करते हो, अगर मैं कहता स्ट्रिंग इक्वल टू ब्रैकेट में 9 लिख देता हूँ, वो कोटेशंस डाल के, तो दैट 9 विल बी स्टोर्ड एज अ स्ट्रिंग, एन ASCII स्ट्रिंग। और उसकी एक्चुअल वैल्यू जो स्टोर होगी वो 57 होगी अगर मैं 9 लिखता हूँ। सो दिस इज व्हेन यू स्टोर नंबर्स एज अ स्ट्रिंग, तो उसकी ASCII वैल्यू यूज होगी। अदरवाइज इट्स इंट, तो उसकी तो डायरेक्टली वैल्यू स्टोर हो जाती है। देख सकते हो तुम ABCDE, कैपिटल A स्टार्ट्स फ्रॉम 65 एंड गोज टिल 90, एंड उसके एग्जैक्टली 32 बाद तुम्हारा 97 से A चालू हो जाता है। ABCDE जो छोटा वाला है वो चलता है 122 तक। And these are the functions, you don't need to worry about them. These are special like system functions जो memory addresses stored होते हैं, don't worry about them. Now we have two strings high and by, and you can see how they are stored in the memory. बैकस्लैश ओ से एंड होते हैं हमेशा दोनों। एंड एज यू कैन सी, जो मैं तब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एस और टी यहाँ पे सिर्फ इनके ऊपर लिखे है ना। तो जो भी स्ट्रिंग का नाम होता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू 5 टाइम्स, स्ट्रिंग का नेम इज द पॉइंटर टू द 0th इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग। ये लाइन बहुत काम की है, इसको ध्यान से सुन लो, रट लो, बहुत काम आएगी। तो जो भी तुम्हारा नाम है दैट इज एक्चुअली अ पॉइंटर टू एच, जो तुम्हारे 0 इंडेक्स पे है। और यहाँ पे जो टी है दैट इज अ पॉइंटर टू योर 0th इंडेक्स ऑफ द दिस स्ट्रिंग, विच इज फर्स्ट 0th इंडेक्स इज बी। एंड नाउ यू कैन सी द प्रॉपर नेमिंग स्कीम की एस ऑफ 0 एच है, टी ऑफ 0 बी है, और इनके लास्ट कैरेक्टर्स एस ऑफ 3 बैकस्लैश 0, टी ऑफ 4 बैकस्लैश 0, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम ऐड कर देता है, वो है। नाउ दिस इज अ गुड डेफिनेशन। सो इसमें क्या समझ में आ रहा है? स्ट्रिंग वर्ड्स, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में टू लिखा है, इसमें वर्ड्स क्या है? टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स हियर। किस डेटा टाइप का है वर्ड्स? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। बोलो बोलो। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ वर्ड्स? बेसिकली एरे तो है ही, पर एरे किस चीज का है? एनीबॉडी? लिखा हुआ है यार उसके पीछे किस चीज का एरे है। चैट बॉक्स? एनीबॉडी? यस। सो बेसिकली इट्स अ एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। अब तुम इसमें देखोगे स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स स्क्वायर ब्रैकेट टू का मतलब है कि ये दो स्ट्रिंग की एक एरे है जिसमें दो स्ट्रिंग स्टोर्ड है। अब मान लो इसके वर्ड्स ऑफ 0 का मतलब हुआ इसके 0th इंडेक्स पे हमने एक स्ट्रिंग स्टोर कराई हाई, और इस एरे वर्ड्स के फर्स्ट इंडेक्स पे हमने एक स्ट्रिंग स्टोर कराई बाय। नाउ दिस इज हाउ इट विल लुक इन द मेमोरी। कीवर्ड्स का 0th एलिमेंट इज आल्सो अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो खुद में एरे होता ही है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द 0th इंडेक्स ऑफ द वर्ड्स एरे आल्सो। जो वर्ड्स एरे है उसके 0th इंडेक्स में एक स्ट्रिंग स्टोर्ड है, उसके फर्स्ट इंडेक्स में भी एक स्ट्रिंग स्टोर्ड है।
and these strings also are individual arrays in themselves. Now this is what I was trying to explain you. It's better explained here. अब तुम ये नोटेशन यूज कर सकते हो अगर तुम्हें आई एक्सेस करना है और आई इज अ एलिमेंट ऑफ द जीरोथ इंडेक्स ऑफ द अरे वर्ड्स, बट वो खुद में भी एक एरे है, तो तुम उसमें एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसको एक्सेस कर सकते हो। तो अब मैं वर्ड्स के जीरोथ एलिमेंट में तो पूरा हाई स्टोर था, बट मैं उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता हूँ 1 पे, 2 पे, 3 पे, तो मेरे को इंडिविजुअल जो उसके कैरेक्टर्स है वो मिल जाएंगे डबल ब्रैकेट नोटेशन यूज करके। So this is also a very important notation. This is basically for nested data types like array के अंदर array store करा दी थी। Uh, Now for strings we also have a file named string.h. तुम्हारी ये header file है जैसे standard input output.h होती है। String.h has a lot of features. You guys should probably explore कि क्या क्या होता है string.h में। I'll give you a documentation. If you are interested, you can go and read. If I can, I think I can. I should open it and show you a little bit. Yep. So these are the functions that are available in string.h. It's a header file. So इसमें से mostly तो तुम्हारे बहुत कम काम आएंगे। Yes, you can use this string copy. String copy से तुम एक string को copy या concatenate कर सकते हो। उसके बाद इसमें एक फंक्शन है string len. This is a very important function. जब भी तुम्हें किसी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी होती है, स्ट्रिंग जीरो इंडेक्स का डिफरेंट इंडेक्स, हाँ एग्जैक्टली, स्ट्रिंग इज ऑन जीरो इंडेक्स, बट उस स्ट्रिंग का भी अपने अंदर एक एरे है, बिकॉज आई एज आई टोल्ड यू स्ट्रिंग इज अ एरे इटसेल्फ। तो तुम जो वर्ड्स की एरे है उसके फर्स्ट इंडेक्स में भी एक एरे स्टोर करा रहे हो, तो तुम उस एरे को भी ट्रेवर्स कर सकते हो जो एरे के अंदर है पहले से ही। तो तुम वर्ड्स के जीरोथ इंडेक्स पे गए, वहां पे एक एरे थी हाई नाम की, अब तुम उस हाई के भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स को इंडेक्सिंग करके एक्सेस कर सकते हो। जैसे एच का था, उसका 0,0 हो गया तुम्हारा, दो स्क्वायर ब्रैकेट में 0 0 लिखोगे तो एच मिल जाएगा, 0,1 लिखोगे तो आई मिल जाएगा, 0,2 लिखोगे तो तुम्हें वो मिल जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ऐसे तुम ट्रेवर्स कर सकते हो एरे के अंदर एरे। So this is a very important function, string length. You will be using it a lot. String copy भी use करोगी, but string length is the one of the most famous things you guys use. You can read the documentation. I will provide you with the link later. उसके बाद you also have a file. Yes, as I said, string len is a very important function. We also have a header file called ctype.h. You guys will learn about it, but if you want to check it out, you can. I will show you. This is the ctype.h. This is a header file and it has mostly comparison functions और verification functions कि अगर तुम्हारे पास कोई type of input है तो तुम उसे validate करा सकते हो is alnum। इसका मतलब हुआ अगर वो character या alpha numeric value है, मतलब number या ABCD है, तो तुम is alnum यूज करोगे। अगर number या ABCD है उसका आंसर true आ जाता है। उसके बाद इसमें और फंक्शंस है, इसमें इज अपर है, ये चेक कर सकता है कि अगर तुम्हारा जो भी एंटर टेक्स्ट है वो अपर केस है या नहीं। उसके बाद इसमें टू अपर है, अगर तुम किसी स्ट्रिंग पे डॉट टू अपर यूज करते हो तो उसके एलिमेंट्स अपर केस हो जाते हैं ऑटोमेटिकली कन्वर्ट। तो ये तुम्हारी सी टाइप डॉट एच बहुत काम की लाइब्रेरी है। एंड यू गाइस हैव टू जस्ट नो द बेसिक फंक्शंस व्हिच यू विल यूज एवरी डे। सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस इज द ASCII स्कीम ओनली। अब तुम देखोगे कि जो ये ए बी सी डी टू जेड है, 65 और 97, इसका डिफरेंस निकाल के बताओ। 97 माइनस 65 कितना होता है? जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स। 97 माइनस 65। यस यू आर राइट, इट कम्स आउट टू बी 32। अब तुम इस 32 का कहाँ यूज कर सकते हो? अगर मैं तुम्हें बोल दूं टू राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट लोअर केस स्ट्रिंग्स टू अपर केस स्ट्रिंग, तुम वो कर सकते हो? मेरे को बताओ यस या नो। I am going to ask you to write a program to convert uppercase strings to lowercase strings or lowercase strings to uppercase strings.
कैसे कर सकते हो जो यस बोल रहे हैं? प्लीज टेल मी हाउ विल यू डू इट? Tell me in the chat box. Please tell me how will you convert uppercase to lowercase? Add 32 exactly. Add 32 subtract 32. तो थोड़ा सा कोड देख लेते हैं इसका. I hope the code is visible. इसमें भी कोई error है क्या? नहीं है. So please raise your hands if you understand what the code does. कोई नहीं उठाएगा. So अमन कुमार नीचे कर ले अपना हाथ. So basically you don't have to worry about all this जो यहाँ पे जैसे hash define buffer size है. ये तुम्हारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था. उसके बाद पूरे में यहाँ पे बफर साइज यूज हो रहा है. तो बेसिकली जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी तुम कोई एरे डिफाइन करते हो तो एरे का तुम्हें पहले साइज इनपुट करना पड़ता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द एरे. तो यहाँ पे बफर साइज कुछ नहीं है, बस एक वेरिएबल है जो कह रहा है कि मेरी कैरेक्टर का साइज 256 कर दो. कि मतलब मेरे पास एक एस एरे आ जाए, एरे ऑफ कैरेक्टर्स जिसमें मैं कैरेक्टर स्टोर करा सकूं और 256 कैरेक्टर स्टोर करा सकूं. दिस इज व्हाट ऑल दिस जार्गन बेसिकली मींस. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. और ये हम इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम एफ गेट्स यूज कर सकें. इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद द एफ गेट्स फंक्शन आई वुड रिकमेंड you study about it. Fgets function is a very nice function which basically lets you input a large amount of text and it handles lots of errors for you. तो जो तुम्हारा scanf होता है उससे अच्छा है fgets. एंड fgets also handles enters automatically. अगर कोई enter दबा दे तुम्हारे कोड के बीच में तो वो ऑटोमेटिकली उसको हैंडल कर लेता है, एरर नहीं आता एंटर दबाने पे. और बाकी का कोड तो तुम्हें समझ में आना चाहिए. बाकी का कोड इज बेसिकली सेइंग कि अगर तुम्हारा s ऑफ i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a और इज लेस देन और इक्वल टू z. अब यहाँ पे तुम सोच रहे होगे कि यहाँ पे मैं s ऑफ i को a से कैसे कंपेयर कर रहा हूँ. मतलब तुम कैरेक्टर को एक दूसरे से कंपेयर कैसे कर सकते हो. बट जब भी तुम C में कैरेक्टर्स को इस तरह लिख के कंपेयर करते हो दे ऑटोमेटिकली गेट कन्वर्टेड इनटू द न्यूमेरिक वैल्यूज. जैसे मैंने तुम्हें एस्काई स्कीम में दिखाया था ना कि 74 स्टोर होता है, 76 स्टोर होता है एबीसीडी के लिए. तो व्हेन इट्स कंपेयरिंग हियर इट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स ए इनटू इट्स व्हाटएवर इट्स न्यूमेरिक वैल्यू इज. ए की तो शायद 93 या 94 थी जो भी थी. तो इट कन्वर्ट्स इट इनटू इट्स न्यूमेरिक वैल्यू. और फिर जो ये हमारी एस नाम की एरे थी इसका एक तो फॉर लूप लगा रखा है हमने. जो भी लेंथ ऑफ एरे होगी मान लो मैं इसको एक बार चला के दिखाता हूँ तब समझ में आएगा. आई होप इट डज नॉट रन इनटू एरर्स. यस नाइस. सो आई होप इट्स विजिबल बट इट्स आस्किंग फॉर अ मतलब कैरेक्टर मान लो बेसिकली इट्स आस्किंग फॉर अ स्ट्रिंग कि इनपुट समथिंग एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू अपर केस और लोअर केस व्हाटएवर इट इज. अपर केस करेगा हमारा वाला. नहीं लोअर केस करेगा. -32 कर रहा है. अपर केस करेगा. तो आई एंटर हाई. दिस इज इनोवर्स. लुक एट द आउटपुट. जैसा तुमने प्रेडिक्ट किया था इट्स एग्जैक्टली कन्वर्टिंग दिस इनटू ऑल कैप्स. नाउ हाउ इज इट डूइंग. अब यहाँ पे मान लो मैंने लिखा हाई दिस इज इनोवर्स. अब इसमें कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे देखो. यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट है दिख नहीं रहे. तो बेसिकली आई हेल्प यू गाइज अ लिटिल बिट. यहाँ पे बफर जीरो प्रिंट एफ. ठीक है. यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करते हैं. प्रिंट एफ.
बड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया इसने तो मेरे लिए. But what we wanted to do is print f bracket में percent I comma strlen of s. This is what we basically wanted to do. अब ये बताओ करेगा क्या ये जो मैंने ये अजीब सा बीच में लिख दिया. प्रिंट एफ परसेंट आई एस टी आर एल ऑफ एस क्या करेगा ये. जल्दी बताओ. ये तो इजी है. व्हाट विल बी दिस लाइन डूइंग. नहीं चाहिए. ऑटो रिकमेंडेशन. चैट बॉक्स प्लीज. व्हाट विल बी दिस लाइन डूइंग. करके देख लेते हैं काम करते हैं. एरर आ गया. लॉन्ग अनसाइलेंट. अच्छा. यस. 149. So as you can see it ran. तो ये बेसिकली मेरे को वार्न कर रहा है कि जब तुम एस टी आर एल एन एन एस यूज करते हो तो यहाँ पे परसेंट डी यूज नहीं कर सकते. यू हैव टू यूज लॉन्ग इंट. आई डोंट रिमेम्बर द specifier for long integer. This would be the specifier only. Li is the specifier for long integer. Now I will write this is inverse. Now you can see this is inverse और यहाँ पे 17 print हुआ. 17 is basically the length of the string I passed into it. अब यहाँ पे 17 print हुआ because it has 17 characters जो भी मैंने enter किया उसमें. एंड इट हैज कन्वर्टेड द 17 कैरेक्टर्स एक एक इंडिविजुअली. यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि फॉर लूप में यहाँ पे जो वैल्यू आई होगी लास्ट में वो 17 आई होगी. सो इट विल इटरेट फ्रॉम 0 to 17. 0 to 16 ही करता है फॉर लूप. एंड इन ईच इटरेशन इट विल गो टू जो हमारी एरे थी एस नाम की उस एरे के ith एलिमेंट पे मतलब 0 to 16 इटरेट करेगा तो एस ऑफ 1 जाएगा, एस ऑफ 0, एस ऑफ 1, एस ऑफ 2, एस ऑफ 3 ऐसे करके इटरेट करता जाएगा. एंड इट विल कंपेयर ईच वैल्यू टू द वैल्यू ऑफ ए. मतलब ए की वैल्यू से बड़ा होना चाहिए जो 93 वैल्यू है और z की वैल्यू से छोटा होना चाहिए जो भी तुम्हारा एलिमेंट होगा. सो इट बेसिकली मीन जो हमारी एस्काई की टेबल थी उसमें स्मॉल ए से लेके z से जो भी एलिमेंट पहले है अगर वो एलिमेंट है तो उस एलिमेंट की जगह क्या प्रिंट होगा एस ऑफ आई माइनस 32. तो अगर हमारा पहला एलिमेंट 93 है तो 93 की न्यूमेरिक वैल्यू में से 32 माइनस कर लेंगे. वो माइनस करते ही हमारे पास 65 आ जाएगा. एंड 65 इज द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ कैपिटल ए. सो इफ आवर लेटर इनपुटेड वाज स्मॉल ए इसके आउटपुट में ऑटोमेटिकली कैपिटल ए आ जाएगा. एंड वी आर यूजिंग अ एल्स स्टेटमेंट हियर. एल्स स्टेटमेंट क्या कर रहा है अगर ये वैल्यू स्मॉल ए से कैपिटल स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में नहीं है तो इट विल लीव इट्स वैल्यू एज इट इज. अगर मैं यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क डाल देता हूँ तो एक्सक्लेमेशन मार्क में कोई चेंज नहीं आएगा. एक्सक्लेमेशन मार्क विल बी रिटर्न एज इट इज. एक बार ट्राई ही कर लेते हैं. हाय दिस इज इन मी लिख देते हैं. चलो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क. एज यू कैन सी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू में कुछ माइनस नहीं हुआ इवन दो ये -32 वाला लॉजिक था. बट बाय डूइंग दिस कंडीशन वी कैन स्किप द -32 की सब में ना हो जाए. अदरवाइज अगर क्वेश्चन मार्क में -32 करते तो उसकी वैल्यू कुछ और ही हो जाती क्वेश्चन मार्क की. एंड नाउ आई विल कंटिन्यू विद आवर स्लाइड. दिस वाज द ASCII स्कीम जो मैं तुम्हें 97 है एक्चुअली स्मॉल ए की वैल्यू 93 नहीं है. आई एम सॉरी अबाउट दैट. 97 वैल्यू है. 97 में से अगर हम 32 माइनस करते हैं तो वी गेट 65. उसके बाद नाउ दिस आई गेस वी शुड टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स because it will take a little bit of time. I will try to give a little overview of it. कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स तुम्हारे ये तो तुम्हें बताया होगा कि जो भी फंक्शन डिफाइन करते हो उसके अंदर जो भी होता है दिस इज द आर्ग्यूमेंट द फंक्शन इज टेकिंग कि क्या क्या वैल्यू ले रहा है फंक्शन. यहाँ पे void लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वो कोई पैरामीटर नहीं लेगा फंक्शन
और यहाँ इंट लिखा हुआ है बाहर में, इसका मतलब है कि ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा अपने रिटर्न टाइप में। एंड नाउ ये जो कॉम्प्लेक्स जार्गन दिख रहा है argc सी एंड argv बी, दीज आर कॉल्ड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। दिस इज यूज जब तुम अपना प्रोग्राम जैसे रन कर रहे हो, तो दिखाता हूँ। यहाँ पे जब हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं, यहाँ पे तुमने देखा होगा बहुत कुछ लिख के आ रहा होगा, यहाँ पे सी डी, यहाँ देखो, यहाँ आ रहा है ना, .c-o अपर केस, यहाँ तक देख लो, वो एक्स्ट्रा तो मेरे कोड स्पेस के लिए है। बट यहाँ पे जो -o अपर केस है, इसके बाद ही हम अपने और आर्ग्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं। अगर हम अपने और आर्ग्यूमेंट्स कमांड लाइन में ऐड करते हैं फंक्शन कॉल करते टाइम, तो दे कैन बी एक्सेसिबल वाया argc एंड argv। अब argc क्या होता है? argc इज द काउंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स वी आर पासिंग। argc का मतलब हुआ, अगर मैं कमांड लाइन में अपने बेस इनपुट के साथ चार और चीजें लिखता हूँ, तो वो argc का काउंट हो जाएगा चार। एंड argv इज द अरे जिसमें तुम्हारे सारे इनपुट स्टोर होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि argv जो तुम्हारी स्ट्रिंग है, उसका 0th इंडेक्स तुम्हारा वो रन करने वाला कमांड ही होता है। जो तुम लिखते हो जीसीसी, जो भी तुम्हारी फाइल का नाम है, -o और आउटपुट का नाम लिखते हो, दैट इज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो argv के 0th इंडेक्स पे अवेलेबल होता है। और उसके बाद अगर तुम कोई भी इनपुट देते हो, तो दैट आर एक्सेसिबल इन द कंसेक्यूटिव एरे के एलिमेंट्स में, लाइक argv ऑफ 1, argv ऑफ 2, ऐसे करके तुम अपने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। एंड ऑल्सो अ लिटिल बिट अबाउट एग्जिट स्टेटस, अभी हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे इन डिटेल जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तुमने बहुत सारे एप्स में देखा होगा कि एन अननोन एरर अकर्ड, ये आ गया, 404 आ गया, तो ऑल ऑफ दीज आर एरर स्टेटसेस। जब भी हम अपना कोड लिखते हैं, तो हम इसीलिए ऐसा लिखते हैं कि अगर हमारे कोड के अंदर कोई एरर आ जाए, तो जैसे यहाँ पे जो मैं कह रहा था, जो रिटर्न टाइप होता है तुम्हारे मेन फंक्शन का, हम डिफाइन करते हैं अगर कोई एरर आ जाए हमारे फंक्शन में, तो एक स्पेसिफिक नंबर रिटर्न हो जाए। जैसे वेबसाइट्स में 404 रिटर्न होता है, हम सी में एज अ जनरल रूल ऑफ थम -1 रिटर्न करते हैं। अगर हमारे फंक्शन में जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आ जाता है, कोई एरर आ जाता है, तो हम खुद ही लिख देते हैं कोड में रिटर्न -1, ताकि जो उसको डीबग कर रहा होगा उसको दिख जाएगा कि यहाँ मेन फंक्शन में आके एरर आ गया, इसलिए उसका रिटर्न -1 है। तो दिस इज व्हाट इज बेसिकली कॉल्ड एरर हैंडलर्स, जो एरर स्टेट बताते हैं। और जरूरी नहीं है तुम -1 लिखो, तुम कोई भी नंबर लिख सकते हो, बट एज अ जनरल कन्वेंशन फॉर एरर्स वी यूज -1, ताकि सबको पता चल जाए कि एरर आया है। उसके बाद ये तो ठीक है, क्रिप्टोग्राफी वी टॉक्ड अबाउट, एनक्रिप्शन वी टॉक्ड अबाउट, इनपुट आउटपुट, प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, and this will be your problem statement this time, so I hope you guys can solve it. And this, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। this is what this is SI, so this is basically it's telling a very basic type of encryption, कि तुम अपने टेक्स्ट को एनक्रिप्ट कैसे कर सकते हो। अगर मान लो मेरे पास कोई भी प्लेन टेक्स्ट है, और साइफर इज अ फंक्शन दैट हेल्प्स यू टू एनक्रिप्ट अ टाइप ऑफ एनी डेटा, टेक्स्ट हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो। साइफर कन्वर्ट्स दैट डेटा इनटू अ एनक्रिप्टेड टाइप ऑफ डेटा विच इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। अब इसके लिए एक की यूज होती है, तुमने देखा होगा, या आई डोंट नो इफ यू गाइस नो, बट एनक्रिप्शन में हमेशा एक प्राइवेट की होती है, जो एनक्रिप्शन की बोलते हैं जिसको, जिसकी मदद से हम अपने प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्टेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज, अभी ये बहुत बेसिक एग्जांपल है जो आगे तुम देखोगे। यहाँ पे मान लो मेरे पास प्लेन टेक्स्ट हाई है, और मेरे प्लेन टेक्स्ट की 1 है। अब की 1 बेसिकली मीन्स कि मैं जो भी मेरा टेक्स्ट है उसमें +1 कर दूंगा वैल्यू में, और रिटर्न कर दूंगा, तो मेरा एनक्रिप्ट हो गया। अब मैं एच में 1 ऐड करता हूँ तो एच आई हो जाता है, और आई में 1 ऐड करता हूँ तो आई जे हो जाता है। सो दिस इज अ वेरी 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 बेसिक टाइप ऑफ एनक्रिप्शन। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे 13 लिख दिया, तो अब मैं एच में 13 ऐड करता हूँ तो यू हो जाता है, और आई में 13 ऐड करता हूँ तो वी हो जाता है। ये भी एक टाइप ऑफ बेसिक एनक्रिप्शन हो गया, कि अब मैं किसी को यू भी भेजूंगा, और मैं, तुम्हारी जो ये प्राइवेट की है जिससे एनक्रिप्शन हुआ, वो की सिर्फ सेंडर और रिसीवर के पास होती है। अब तुम्हें पता है मेरी जो एनक्रिप्शन स्कीम है, कि वो है कि मैं +13 कर देता हूँ, ये बात सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है। अब मैं तुम्हें यूवी टेक्स्ट पे भेजूंगा, वो सब देख सकते हैं कि मैंने यूवी भेजा, बट सिर्फ तुम्हें पता है कि जब मैं -13 करूंगा यूवी में, तभी मुझे जो एक्चुअल मैसेज हाई है वो मिलेगा। ये बात सिर्फ सेंडर और रिसीवर को पता होती है। और बेसिकली जो ये फंक्शन होता है, यहाँ तो हम बेसिकली ऐड +13 कर रहे हैं, बट इट्स नेवर दैट सिंपल, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फंक्शन,
जिसकी मदद से एन्क्रिप्शन होता है। जो तुम्हारी बैंकिंग एप्स होते हैं, तुमने सुना होगा SSL 256 बिट ऑफ एन्क्रिप्शन। तुम देखते होगे कि 256 बिट्स ऑफ एन्क्रिप्शन यूज होता है आजकल जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है। तो दे यूज वेरी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स टू डू दैट। अब जैसे आई लव यू है, उसको तुम इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। सो दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ एन्क्रिप्शन। एंड हाउ मेनी लेटर्स आर इन द अल्फाबेट? तुम्हें पता होगा 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में। सो इफ यू एड 26 ओनली टू 26, तो इट जस्ट रिटर्न्स द सेम स्ट्रिंग बैक। WhatsApp encryption, exactly. So it's a 256-bit encryption, and 256-bit encryption is the best in the world these days. 512 भी यूज करते हैं, but 256 is the standard and it's very strong. You can trust that कोई हैक नहीं कर रहा है इजीली उसको। और एनक्रिप्शन करने के बाद डिक्रिप्शन भी करना पड़ता है। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि की मेरी +1 थी। अब जो मेरा रिसीवर एंड होगा, रिसीवर एंड के पास की जाएगी -1, कि जो भी मैसेज मेरे पास आएगा उस मैसेज में से -1 करोगे, तब तुम्हें तुम्हारा असली रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये जो भी मेरी की थी उसमें अब मैं एक एक में से -1 करूंगा, तो उसका फाइनल आंसर आ जाएगा, दिस वाज CS50। सो दिस वाज द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू फॉर अटेंडिंग गाइस। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू मे आस्क नाउ। Anybody who has any doubts about the lecture? Today we talked about arrays and strings, and we also dived into a little bit of encryption and also reading levels. So if anybody has any questions regarding all of it, PPT तुम्हें provide कर दी जाएगी. If you have any questions, please ask. No questions? 16 ही लोग बचे हैं. All clear guys? किसी के पास question नहीं है? भैया वो अपर केस वाले में डायरेक्ट वो टू अपर वाला फंक्शन, यस ऑब्वियसली। एक बार रिवाइज कर लो, नेक्स्ट पूछूंगा। ओके, सो यस, इफ इट वाज नॉट अ बिट क्लियर कि तुम्हें लगा कि बहुत कुछ बोल दिया मैंने और समझ में नहीं आया, तो एक बार जो पीपीटी भेजूंगा उसको पढ़ के देखना और फंक्शंस को एक बार हाथ से लिख के देखना। यू विल गेट अ मच बेटर आइडिया ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स। एंड ये जो पूछ रहा है अपर केस वाले में टू अपर फंक्शन, यस, तो टू अपर फंक्शन जो तुम सी टाइप कॉल करते हो ना लाइब्रेरी, उसके फंक्शन डेफिनेशन में यही चीज लिखी हुई है कि जो भी तुम्हारा वो होगा उसमें से -32 कर दो। इट्स जस्ट दैट कि तुम कन्वीनियंटली वो पहले से ही कहीं डिफाइंड है तो तुम उसको कॉल कर सकते हो, बट दैट वाज द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कि उसके भी बैकएंड में ऐसा ही लिखा हुआ है कि जब कोई नंबर आता है वो अगर A to Z से छोटा है और टेक्स्ट है तो उसको -32 कर दो, अदरवाइज उसको नॉर्मल रिटर्न कर दो। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सी टाइप डॉट एच। बट तुम्हें अगर कॉल करना है तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो, यहाँ पे बस लिखो हैश डिफाइन। यू गाइस जस्ट नीड टू राइट हैश include c type dot h, caps हो गया, let me turn off my caps lock, type dot h। सो बेसिकली जो पूछ रहा था कि टू अपर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, तो यस यू कैन डायरेक्टली यूज टू अपर, सेम काम हो जाएगा उससे भी। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने सी टाइप डॉट एच पहले यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, और सी टाइप डॉट एच में टू अपर फंक्शन डिफाइंड है, यू कैन डायरेक्टली यूज द टू अपर फंक्शन। एस ऑफ आई अननोन टाइप एस, एस डिफाइंड नहीं है क्या, हटा दिया मैंने। string length of s is not a printf upper, it should work to upper character।
कभी कभी जब तुम फंक्शंस यूज करते हो सी टाइप डॉट एस के, तो तुम्हें एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ता है कि जो तुम एरे का एलिमेंट पास करो, क्योंकि उसको नहीं पता कि तुम्हारे एलिमेंट क्या है एरे के, किस डेटा टाइप के। तुम्हारे एरे के एलिमेंट इंटीजर भी हो सकते हैं। तो सी डज नॉट हैज द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट कि तुम्हारे एरे के अंदर क्या एलिमेंट है। तो वो तुम्हें एक्सप्लिसिटली एरर दे देता है कि अननोन टाइप नेम एस। उसको नहीं पता एस के एलिमेंट किस टाइप के हैं। अगर कैरेक्टर नहीं है तो ऑब्वियसली इट कांट कन्वर्ट इट टू टू अपर केस। तो यू हैव टू एक्सप्लिसिटली डिफाइन इन सी कि ये एक अनसाइंड कैरेक्टर है, इस डेटा टाइप का है, जो कैरेक्टर है बेसिकली इसका डेटा टाइप। देन यू कैन यूज द टू अपर फंक्शन। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। आई होप इट डज। यस, इट इज इंडीड वर्किंग। अब इसमें लिख देते हैं दिस वाज सेशन 3 ऑफ fundamentals of C. And as you can see, it does convert everything into uppercase, and it's also showing it has 39 characters. So this is basically how you can either use ctype.h or its implementation of -32. Any other doubts if anyone else has? New tasks will be put by today night, like 12 बजे से पहले मिल जाएंगे. And there are, the task's name is readability. As I already told you about reading levels, it is related to that only, and one of them will be about encryption also. I hope readability तो पक्का है, मैंने ही बनाया है. You will enjoy that problem. So that was it. Thank you guys for joining. Now we will conclude the session. Have a good night.